everyone, welcome back to Shruti's Psychology World. Today the topic is how to handle a criticizing partner. You are going to have complaints from time to time, but how you choose to communicate your grievances is what matters the most, right? So criticism is when you focus on your partner's flaws and pass your judgment. It is expressed through correcting them, blaming, disapproving, and nitpicking or fixing. Rather than focusing on specific behaviors, rather than addressing specific behaviors, what you're doing, you are attacking your spouse's character. So criticism is when a complaint is expressed as a character flaw. This is criticism. So how do we get to know whether this is a complaint or criticism? Whether you are constructively voicing a complaint or you are just criticizing your partner. How do you get to know? You need to consider your language. Criticism is frequently doled out in the form of you never, you always statements. अब जब आप ऐसे बोलते हो, you never come in time, you are always late, you are mean, you are selfish, you are inconsiderate. Then it means you are speaking in absolutes. So when you are speaking in absolutes, when you are using harsh words, and when you frequently lash out at your partner, no matter what they do, regarding their dress, regarding their job, their family, their friends, certain personality characteristics, then it means you are criticizing your partner. It is a sign of emotional abuse. You understood? So क्रिटिसाइजिंग पार्टनर्स दे आर वेरी स्मार्ट. वो इस तरह से अपनी जो फ्रेम करते हैं अपने क्रिटिसिज्म को, दे से आई लव यू माई डियर, आई लव यू माई हनी, आई वॉन्ट यू टू बी परफेक्ट. इसीलिए मैं आपको ये आपकी गलतियाँ बताता हूँ, बट बींग अप्रोच्ड दिस वे डजंट फील लविंग एट ऑल. इट इज़ क्रिपलिंग टू फील दैट आपको ऐसा लगता है कि यू कैनॉट डू एनीथिंग राइट, यू कैनॉट मेक योर स्पाउस हैप्पी. आपको ऐसा लगता है कि आप उनको खुश नहीं रख सकते, आप कुछ भी ठीक नहीं कर रहे अपने इस रिलेशनशिप में. आप अपने ऊपर सारी बात ले लेते हो व्हेन यू स्टेइंग विद अ क्रिटिसाइजिंग पार्टनर, राइट? सो इसके बाद वो फीडबैक की बात करते हैं. वो ये कहते हैं कि हम आपको फीडबैक दे रहे हैं regarding yourself, regarding your personality. Healthy feedback is about the behavior, not a person. पर वो बिहेवियर को नहीं पकड़ते, वो आपके पूरी पर्सनालिटी, पूरे कैरेक्टर को पकड़ते हैं. सो व्हेन दे स्पीक लाइक दिस, द मैसेज इज ऑफन इग्नोर्ड, द फीडबैक इज पॉइंटलेस बिकॉज ऑफ द मैनर इन विच इट इज डिलीवर्ड. इट इंक्लूड कमेंट्स सच एज कर्सिंग और demeaning labels. सो इट किल्स एनी वैल्यू द मैसेज हैज़. बट उनको ये बात समझ में नहीं आती, बट दे कीप ऑन क्रिटिसाइजिंग यू, राइट? सो ये कौन लोग होते हैं? दे आर कंट्रोल फ्रीक्स, हाई मेंटेनेंस पीपल. दे आर कंपेल्ड टू क्रिटिक एवरी लिटिल थिंग यू डू. दे हैव अ हाई लेवल ऑफ अनकॉन्शियस एंजाइटी and that influences everything they do. And they probably have not identified this anxiety. It's coming from within themselves. ये उनके अंदर है ये anxiety. This is unconscious anxiety. So they are so motivated, highly motivated to get control of the world. Moreover, they are self-critical. They may not even realize how critical they seem to be. They are accustomed to speak to themselves this way only. जब उनसे कोई गलती होती है तो वो अपने आप को इतना क्रिटिसाइज करते हैं कि उनकी ये आदत बन जाती है सबको क्रिटिसाइज करना, राइट? सो दे से लाइक दिस. उनकी गलती होती है तो वो कहते हैं कि यू स्क्रू अप अगेन, यू डिड द सेम मिस्टेक. तो अपने आप को बहुत इंसल्ट वो खुद भी करते हैं. दे आर वेरी सेल्फ क्रिटिकल. सो नाउ यू अंडरस्टैंड कि ये प्रॉब्लम क्या है. अब ये प्रॉब्लम ये है. एक्चुअल द रियलिटी इज दिस इज़ नॉट योर प्रॉब्लम, दिस इज़ योर स्पाउस प्रॉब्लम जो क्रिटिसाइज कर रहा है. दिस इज़ नॉट अबाउट यू, दिस इज़ अबाउट हिम. सो वी कैन कल्टिवेट ग्रेस एंड एम्पैथी टुवर्ड्स देम. नाउ यू कैन हैव अ डिटेल्ड वर्जन ऑफ फ्रॉम वेयर इट इज़ कमिंग फ्रॉम, right? So but at the same time you need to tell them what harm this criticism is giving to you. ये क्या harm आपको पहुंचा रहा है, ये आपको उनको बताना है. You need to tell them that now I can handle a little criticism, but this is really pulling my spirits down. You have entered my zone. Now you are entering, you're crossing your limits, and you have to give them heads up that their critics are becoming excessive. You need to tell them. ये तो होगी एक सिंपल बात. Now little technical.
you need to soft the startups. जब आपको लगे कि कोई argument शुरू होने वाला है, you have to start it in a very soft way, and it can help you resolve your conflicts in a productive way. For example, you can complain, but don't criticize, right? For example, आपको पता है कि your spouse is at fault, but approaching him with accusations and criticism is not at all helpful and productive. ये कभी helpful नहीं रहेगा. For example, अगर आप criticizing partner हो तो आप ऐसे बोलते हो, you said that you would clean the house and including balconies and backyard, but you're still here. आप इधर ही बैठे हो, आप कोई काम नहीं कर रहे हो, आप फ़ोन देख रहे हो, आप गेम्स खेल रहे हो. You are really insensitive, you are inconsiderate, you are so careless. It's disgusting. But on the other hand, आप ऐसे भी कह सकते हो इस बात को कि अगर जैसे कि हमारा एग्रीमेंट हुआ था, मैं एग्री किए थे हम इस बात पे कि बिकॉज आज डोमेस्टिक मेड ने नहीं आना एंड हमारे घर पे एक छोटा बच्चा है, देन हाउस हैज़ टू बी क्लीन एंड यू सेड यू वुड क्लीन द हाउस एंड आई वुड टेक अप द कुकिंग पार्ट. But आप यहाँ बैठे हो and I'm done with my work, but you're still here and I'm really upset about it. I'm disappointed. You can be a little more considerate, right? So please make sure that it is not repeated in future. आप थोड़ा ध्यान रखें इस बात का. So you are a little respectful with your requests, with your point. You are not derogatory. आपने इनको एक्सप्लेन किया कि आपको क्या फील हो रहा है, आपने इनको एक्सप्लेन किया कि आपको बुरा लगा, बट आपने इनको क्रिटिसाइज नहीं किया, राइट? अगेन नेक्स्ट इज यू कैन स्टार्ट विद आई स्टेटमेंट्स, नॉट यू. आप उनको ये नहीं कह सकते यू आर सो केयरलेस, राइट? अगर आप ऐसे बोलते हो तो ये भी क्रिटिसिज्म है. अगर आप ऐसे बोल यू आर सो केयरलेस विद मनी, आप बहुत खर्चा करते हो, यू आर सो केयरलेस. आप ये कह सकते हो कि सी वी आर लिटिल टाइट ऑन बजट, कैन वी ट्राई टू सेव मोर. इस तरह से आप अपनी बात कह सकते हो टू स्टार्ट विद, राइट? देन यू कैन, अगर आप कई बार मोस्टली वाइफ्स ऐसे बोलते हैं यू आर नॉट लिसनिंग टू मी, आप मुझे नहीं सुनते हो, यू कैन से लाइक दिस, आई कैन नॉट फील हर्ड राइट नाउ, राइट? सो यू हैव टू बी रिस्पेक्टफुल and you should not be derogatory, right? So what happens, इससे क्या होगा? It means you have, what I'm trying to say, I'm saying that you have to be clear, you have to describe what is happening, you have to convey your needs, right? You have to tell how you are feeling right now. No matter how long you have been staying with your partner, no matter how well you know each other, you cannot expect them to read your mind. So you have to learn how to convey your needs in a positive way, right? So अगर हम ऐसा नहीं करते, अगर हम बहुत क्रिटिसाइज करते हैं, कॉन्स्टेंट क्रिटिसिज्म है हमारी पर्सनालिटी में, देन इससे क्या होगा? इट वाइडन्स द इमोशनल डिस्टेंस बिटवीन यू एंड योर पार्टनर, एंड the warmth, the positive feelings you once shared diminish and they are replaced by resentment and hostility. और marital relationship, ये relationship तो emotions पे ही based है. अगर उसमें इतना problem आ गया, वो gap आ गया, then how can you survive in this relationship, right? So please take care. And moreover, you need to understand one thing, whoso is criticizing, nobody likes to be criticized or picked apart. It is really painful, it is demoralizing, and it really hurts, it really breaks somebody's heart, and it is a terrible place to be in marriage when you are living with a criticizing partner. So please take steps, both of you, husband and wife, and get into a healthier dynamic, right? So this is all about criticism. Hope you got my point, and just work on yourself, improve yourself, and lead a beautiful life, right?